Assalamualaikum. Today we'll be doing the final topic of chapter 3, which is technology and the marketing mix. These are the learning objectives. Define and explain the concept of e-commerce, opportunities and threats of e-commerce, and use of internet and social media networks for promotion. And then marketing strategy, what marketing strategy is, justify marketing strategy appropriate to a given situation, because in every situation, marketing strategy would change. Nature and impact of legal controls and opportunities and problems of entering new foreign markets. So to start off, what is technology and the marketing mix? Now these days we know कि e-commerce का बहुत ज़्यादा trend start हो चुका है, ठीक है? E-commerce means electronic commerce, which means कि online जो आप trade करते हैं, goods and services. So the use of the internet to promote, sell, and buy goods and services. So we have a few popular examples: Amazon, eBay, Alibaba, AliExpress, Daraz. If we talk about local things, okay? This is what e-commerce is. So what's the impact of technology on the marketing mix? If a product is technologically advanced, it may need less promotion and sell at a higher price. Why? Because technologically advanced items कम होते हैं, उसके competitors कम होते हैं, so it needs less promotion, and because a lot of work has been put into it, so it can charge higher prices. More technologically advanced database will allow a firm to target its marketing mix more exactly. Why? Because जो भी database means जो भी आपके पास data होगा about your target market, that will be much more specific, ठीक है? So the more advanced system, उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से आप अपनी target audience को promote कर सकते हैं अपना product. Technology is helping firms to produce high quality products at relatively low costs. ज़्यादा technology अगर अच्छी होगी, the new technology is basically more efficient and more effective, cost effective. यानी वही चीज आप ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं इन लेस कॉस्ट इन लेस टाइम, तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है और आपकी कॉस्ट भी डिक्रीज हो रही है. So promotion and place are then used to achieve product differentiation. Where do you plan to sell it and how do you plan to promote it? Internet is affecting the need for traditional shops. You can now see a lot of businesses have either shifted or maybe they have included online shops as well, online trading stores, and some or maybe many people have started only online business. Okay, so it's taking over from television as the main medium of promotion. And if we see in every department, even in education, अब edtech की बहुत ज़्यादा अच्छी academies बन गई हैं. As an example, ठीक है जी, नून academy हो गई या बायजूस हो गई इंडियन जो है, ठीक है. So now things are shifting online. All right. What are the opportunities and what are the threats for the businesses of e-commerce then? Opportunities तो ये कि reduced cost, you don't need to hold inventory, store inventory, कोई आपको लिए जगह specifically होना जरूरी नहीं है, ठीक है. Can take orders at all times. Shops में तो ये ना कि there is a limit कि आप 10 बजे से 10 बजे तक खोल सकते हैं, और maybe people are sleeping. यहाँ पे आपके पास 24/7 की opportunity है to engage your customers, ठीक है जी, आप कभी भी order ले सकते हैं. Reduced barriers to entry means कि you and I can also open up an online store. उसमें कोई ज़्यादा formalities नहीं, कोई ज़्यादा documentation नहीं होती, ठीक है. So barriers to entry बहुत कम है. आप even operate कर सकते हैं across the border. So for instance, if you have to order something from China or maybe another country, that's very easy to do. Yes, it might take up some time, but eventually product आपके पास आ जाएगा. Improved service for customers can be updated, right? तो आप business perspective से कैसे opportunity है कि आप अच्छी service provide कर सकते हैं online, and obviously develop and create loyalty if you produce or if you deliver good service or good experience for the customer. फिर आप brand loyalty अपनी area में बैठे बिठाए ले सकते हैं, ठीक है. However, threats भी हैं जी, fraud के chances ज़्यादा हैं, so some people might not be engaged in ऑनलाइन बाइंग, तो इससे आपका बिजनेस अफेक्ट हो सकता है. प्रोटेक्शन ऑफ डेटा, यानी जो हैकर्स होते हैं, योर डेटा कैन बी स्टोरन एंड बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, ठीक है, कुछ कंपनीज का. तो सो इफ दैट इज स्टोरन अवे, टेकन अवे, वहाँ पे फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है. आज वॉज द केस विद बैंक इस्लामी, जिनका बहुत ज़्यादा कस्टमर्स के डेटा बेसिकली चुरा लिए गए थे, एंड देन फेक ट्रांजेक्शन वर टेकिंग प्लेस एंड पीपल वर कंप्लेनिंग, ठीक है. Site maintenance, sometimes if you visit a site, उसमें लिखा होता है जी, hold on, site is under maintenance, something like that, which might upset customers and they might move to your competitors. ठीक है जी. Increased competition, why? Because low barriers to entry, तो increased competition भी होगा, ठीक है. And now you even face competition from your online competitors.
ट्रेड लॉज, कल्चर्स, कस्टम्स डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट होते हैं, तो हो सकता है यू माइट नॉट बी engaging the customers of a particular area very well, right? For the consumers, however, opportunities क्या है? Reduced prices, competition बहुत ज़्यादा है, तो obviously prices पे effect आना था. Increased choice, variety बहुत ज़्यादा बढ़ गई. Even if you go at Daraz, you search one thing, you get multiple suppliers at different price rates. So variety बहुत ज़्यादा आ गई है, options बहुत ज़्यादा आ गए हैं. Can purchase anytime. Again, this is available 24/7. आपको अगर एक दिन में चाहिए उसके लिए express delivery भी available है, ठीक है? But if you want it फॉर द नॉर्मल ड्यूरेशन 2-3 दिन बाद चाहिए, 5 दिन बाद, वो भी हो सकता है. एंड कभी भी आप परचेज कर सकते हैं. ईजी टू कंपेयर प्राइसेस एंड ड्राइवर प्रोडक्ट्स. फिजिकली अगर आप जाते हैं, यू हैव टू मूव फ्रॉम शॉप टू शॉप, ठीक है? वहाँ पे राखी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. यहाँ पे इट्स वेरी ईजी, जस्ट प्रेस ऑफ अ बटन एंड यू कैन गेट ऑल द डिटेल्स ऑफ द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइसेस, एवरीथिंग. However, again, internet credit card fraud, especially customers के लिए ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि they are the ones who are putting in their data. तो यहाँ पे a lot of money can be at stake. Data protection, again वही चीज़ है. Waiting time between order and delivery. Sometimes अगर कोई चीज़ unforeseen circumstance की वजह से हो सकता है ऑर्डर कभी आए ना, that might happen with you guys as well. या फिर अगर आए तो बहुत टाइम बाद आए, might be a little confusion, ठीक है? This is rare, but this can happen. Some products may not suit e-commerce. For example, clothing का बेसिकली पर्पज ये है कि सीइंग इज बिलीविंग, या इफ यू टच द प्रोडक्ट. कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको टच करके अंदाजा होता है, ठीक है जी, देखने में बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, बट वहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, सही है? स्पेशली क्लोथ्स, आइटम लाइक क्लोथ्स, या जहाँ पे टेक्सचर इंपॉर्टेंट हो जाता है. So let's move on to the marketing strategy. Marketing strategy is a plan to combine the right combination of the four elements of the marketing mix for a product to achieve its marketing objectives. ठीक है जी, 4 elements कौन से थे? Product, price, place, promotion टू अचीव इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव. यानी आपने सही से प्रोडक्ट चूज करना है, एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्लेस, प्रमोशन, एंड व्हेन यू कंबाइन द राइट कॉम्बिनेशन, उसके बाद यू आर एबल टू अचीव मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, एंड दैट्स व्हाट मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज, right? Then what is a marketing plan and what objectives does it aim to achieve? Increase brand awareness. Obviously, marketing plan में आपका purpose होगा जी कि you need to increase your brand awareness, meaning more people should know about your brand. Increase market share, which another word, other word means कि you have to increase sales. Sales से ही आपका market share बनेगा. If you have to launch a new product, फिर marketing plan आपने उसका बनाना होगा. Where should we launch it? What price should be set? Again, the right combination of 4 P's. Improve return on investment. If you're investing $100, let's say, and if you're getting 120 as a whole, so 20% आपका return है. इसी return को आपने improve करना है, ठीक है? Enter new international or local markets. Again, marketing plan हर market के लिए different होगा. Increase company profits, optimize the conversion tunnel, converting the potential customers into the real customers. ठीक है? तो potential customer क्या होता है? They are not your customers, but they can be your customers. So you have to convert them, attract new clients, increase customer loyalty, and increase sales. So factors that affect the marketing strategy. अच्छा, टारगेट मार्केट को देख के आप अपनी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन सेलेक्ट करते हैं, एंड देन यू कम अप विद द रिलेवेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी. फॉर इंस्टेंस, प्रोडक्ट में क्या डिस्कस कर रहे होंगे? इज द प्रोडक्ट न्यू एंड इनोवेटिव और एन एग्जिस्टिंग वन? अगर न्यू है तो उसकी मार्केटिंग अलग है, अगर एग्जिस्टिंग वन है तो उसकी अलग है. व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट डज द टारगेट मार्केट लाइक? Does the product need to be changed to meet customer tastes, or should we go on with the current one? Price. What price will the target? देखो यहाँ पे you are considering what target market's preferences are, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है. कंपेटिटर्स क्या प्राइस चार्ज करते हैं? व्हाट प्राइसेस विल हेल्प कवर यूनिट कॉस्ट? आपने अपनी कॉस्ट को भी देखना है, टारगेट कस्टमर्स को भी देखना है. प्लेस. वेयर डज द टारगेट मार्केट बाय देयर प्रोडक्ट्स? इज इट ऑनलाइन, फिजिकल, बोथ? कैसे सेल किया जा सकता है? वेयर शुड द प्रोडक्ट बी सोल्ड? किस पर्टिकुलर मार्केट में? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक वी स्टडीड बिफोर, आई थिंक कल हमने पढ़ा था 4-5 चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किए थे. कौन से चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी सूटेबल फॉर आर टाइप ऑफ आर प्रोडक्ट, ठीक है? What channels of distribution do competitors use? What channel of distribution will help get products to target customers quickly, etc. Then comes promotion. भाई कौन से methods use किए जाएं, कौन से mediums use किए जाएं? How much budget do we have available for promoting our product? When you combine the right mix of these 4 P's, then you come up with a good marketing strategy, right? Then comes legal controls on marketing. Yani, are you allowed to market anything?
or there are some legal controls. Obviously there are some legal controls हर चीज पे. Are there any legal concerns when developing your marketing mix? Obviously yes, legal boundaries में रहते हुए you have to market your product. ठीक है. For instance, various laws that can affect marketing decisions on quality, price, contents of advertisement. यानी आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी किस हद तक मेंटेन करनी है. इट शुड नॉट बी फॉल्टी गुड. प्राइस ऐसी ना हो कि एक्सप्लॉइटेटिव हो आपकी. ये लीगल कंट्रोल्स हैं. अब अगर आप एक्सप्लॉइट कर रहे होंगे तो फिर गवर्नमेंट कैन इंटरवीन एंड कैन चार्ज यू. ठीक है. या फिर आप क्या प्रमोट कर सकते हैं, किस तरीके का कंटेंट ऑफ एडवर्टीजमेंट शो कर सकते हैं. समटाइम्स इट माइट बी टू वल्गर टू शो, बट yes, you can show that sometimes. Here we'll discuss about the example आगे. So what about the product के लिए क्या legal controls हैं? So laws that protect consumers from being sold faulty and dangerous goods. यहाँ पे आप faulty goods नहीं बेच सकते. If you are selling faulty goods and you're saying हाँ जी नया product है good quality, इसका मतलब है misrepresentation हो रही है. So laws protect the consumers from being sold faulty goods. ठीक है. अगर कोई बेचता है तो उस पर लीगल एक्शन लिया जाता है. And the customer can sue the supplier. What are the guarantees then? Goods, the guarantee for the goods, the guarantees include that goods must be of acceptable quality. यानी आप जितना पैसा दे रहे हैं it should be value for money. ऐसा ना हो कि आप पैसे नहीं के दे रहे हैं, पीछे से वो चीज़ पुरानी या फॉल्टी निकल रही हो. Goods must match their description and that match sample or demonstration model. ऐसा ना हो कि आपको sample कुछ और शो किया जाए and when the customer says thinks कि यार sample is good enough so we'll buy the product, हो सकता है product जो है that is faulty or maybe not according to the sample that was shown. तो ये सारी guarantees होती हैं to the consumer, इनके against protection दी जाती है. So for instance, I'm sure you must have had this kind of an experience. Laws that prevent the firms from using misleading information in advertising, and that is very common. ठीक है. Advertisements में be it on televisions या be it on the billboards या जो भी electronic boards लगे होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको for instance बर्गर की शक्ल ही अलग नजर आ रही है. ठीक है. It's very fluffy, it's very big, and it's looking like this is the most fresh piece in the world, right? But actual burger हो सकता है वो आपको अंडे वाला बर्गर हो. ठीक है जी. और समथिंग वेरी सॉगी या समथिंग वेरी नॉट दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन, यानी मिस रिप्रेजेंटेशन बहुत हो. ठीक है. तो द रियलिटी माइट बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट. तो इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन होती है. अगेन दे आर शोइंग कि इफ यू अप्लाई दिस यू विल स्टे यंग फॉरएवर. हाउएवर अप्लाई करके वो काम खराब हो गया उनका. आपको दिखाते लेफ्ट हैं और देते राइट हैं. समथिंग लाइक दैट. मे बी दिखाते राइट है, मे बी देते लेफ्ट हैं. सही है. So either way. Then laws that protect consumers from being exploited in industries where there is little or no competition, known as monopolizing. ठीक है जी. Monopoly क्या होती है? Monopoly is basically a sole provider. तो क्योंकि वो sole होता है, यानी एक होता है primarily, तो वो क्या कर सकता है? वो exploit कर सकता है consumers को by setting higher prices because it knows कि यार competition तो है नहीं. ठीक है. या बहुत कम है, तो let's charge higher prices for our faulty good या for our not so good प्रोडक्ट. इस केस में फिर गवर्नमेंट इंटरवीन. गवर्नमेंट फिर इस केस में ज्यादा कंपटीशन जनरेट करना चाहती है सो दैट मोनोपोली की पावर जो है वो ब्रेक हो. ठीक है. यहाँ से प्रोटेक्शन मिलती है आपको. देन लॉस प्रोटेक्ट फ्रॉम अनएथिकल एड्स. व्हाई डू यू कॉल दिस अनएथिकल? बिकॉज फॉर इंस्टेंस फेयर एंड लवली का जो कॉन्सेप्ट है that is what basically they are equating fairness with beauty and which is wrong. ठीक है जी. so they are portraying कि यार जो काले लोग होते हैं they are not beautiful या उनकी शादी नहीं हो रही होती. ठीक है. तो जैसी वो क्रीम लगाते हैं गोरे हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है. नाउ दिस बेसिकली अफेक्ट्स स्पेशली द गर्ल्स. ठीक है जी. और क्योंकि दे आर मोर इमोशनल बीइंग्स, वहाँ पे दे आर एक्चुअली बेसिकली दिस इज रेसिज्म, राइट. ये रेसिस स्टार्ट हो जाते हैं फिर कि यार जब काले हैं तो फिर आप प्यारे भी नहीं हैं, आपकी शादी भी नहीं होनी है. और अगर आप फेयर एंड लवली लगाएंगे, फेयर एंड लवली, सो यू सी द नेम फेयर एंड लवली, यानी फेयर इज लवली बेसिकली. And that's what unethical ad means. ठीक है. So for instance, I really liked Sajal Ali, but then she did Fair and Lovely, and now I'm kind of sad. So people, follow these stars, and the stars, without thinking, just for the sake of money, they do such kind of an ad. जहाँ पे obviously Fair and Lovely का concept ही गलत हो जाता है. ठीक है. So यहाँ पे protection देनी चाहिए और I don't think दी जाती है, but देनी चाहिए. ठीक है. So this concept should maybe could be ग्लो. ठीक है. कि आप स्किन ग्लो कर लें, दैट इज बेटर. चलो,
बट फेयर एंड लवली कि आप गोरे होंगे तो पे प्यारे होंगे, समथिंग लाइक दैट इज वेरी अनएथिकल. सो प्रोटेक्शन फ्रॉम मिसरिप्रेजेंटेशन भी है और प्रोटेक्शन फ्रॉम अनएथिकल एड्स भी है, right? Why do we enter new market and how do you enter new market? Identify your target market. अच्छा, now we have to move towards this target market. Perform market research. Research क्या होनी है जी? Competitors कौन कौन है? आपकी target market किसको consist करती है? Suppliers कौन कौन है? Everything about the market. Define your market strategy. Again, we did what marketing strategy is. Product, price, place, promotion का right combination. Then make a plan. Risk mitigation strategy. What are the risks involved? Mitigation कहते हैं कम करने को, तो आप उसको कम से कम करना चाहते हैं because obviously risks cannot be eliminated properly, yeah, eliminated wholly. Ramping up and then exit strategy. What if we try to exit the market? Then what will be our strategy then? It's not that we exit the market and that's it. ठीक है, तो आपने वो भी सोच समझ के करना होता है. पॉसिबल रीजंस क्या है जी टू एंटर द न्यू मार्केट? मे बी डिक्लाइनिंग और सैचुरेटेड डोमेस्टिक और करंट मार्केट, या जो करंट मार्केट है आपकी वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन ओवर क्राउडेड हो गई है, तो आप न्यू मार्केट में चले जा सकते हैं. या फिर यू हैव टू एक्सटेंड द लाइफ साइकिल. रिमेंबर परसों आई थिंक वी डिड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो वहाँ पे हाउ कैन यू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट बाय एंटरिंग इनटू न्यू मार्केट्स. ठीक है, एक्सपैंड एंड ग्रो द बिजनेस, दैट्स अ कॉमन वन. गेन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आप अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो फिर यू विल बी एबल टू अटेन और अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी लो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट. Increase reputation, meet a need or want, increasing competition in domestic market, gain first mover advantage. Sometimes you see a market जहाँ पे एक product नहीं launch हुआ हुआ होता, कोई भी नहीं दे रहा होता. So you want to be the first one to provide that and capture almost 100% of the market. And to diversify your risk. जितनी ज़्यादा markets में आप होंगे उतना ज़्यादा risk diversify हो जाएगा. So for instance अगर एक भी market में आप थोड़े बहुत unsuccessful हो भी जाते so you still have others. ठीक है, in order to make up for the loss. Then potential problems क्या हो सकती हैं? Especially if you move into a new country abroad, वहाँ पे language मसला हो सकता है, communication barriers, cultural barriers, religion, some religion might not allow some production of goods and services. Foreign laws को आपने adapt करना होता है, उनके tax laws अलग होते हैं, उनके laws, legal laws अलग होते हैं. So you need to study them before moving. ठीक है, हो सकता है आपके लिए बहुत मुश्किल हो अडेप्ट करना. फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट्स कैन डिमांड, क्योंकि देखो कैन अफेक्ट डिमांड, क्योंकि आपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना होता है. अगर आपका एक्सचेंज रेट स्टेबल नहीं है तो हाउ वुड बी नो कि हमें फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, क्योंकि समटाइम्स लेट से डॉलर बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, समटाइम्स बहुत नीचे आ रहा है. इस अनसर्टिनिटी में यू आर नॉट एबल टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, क्योंकि यू कैन लूज एनी टाइम. इट्स अ गैम्बल बेसिकली. Possible increased risk of non-payments, क्योंकि again that's a new market for you, new market dimensions. हो सकता है वहाँ पे legal control इतने अच्छे ना हो, so what if आपके साथ fraud हो जाए. Corruption issues and ethics, obviously cheap labor, poor working conditions, ये as was the case with Apple factory in China. ठीक है, वहाँ पे ये problems आ रहे थे. So how to overcome the problems of entering new markets? आप joint venture कर लें. Joint venture, as we have studied before as well, you merge with another firm जो कि उस market में already operate कर रही होती है, तो that will decrease the risk. Licensing कभी हम in a while देखते हैं क्या होता है. Franchising, we've already discussed what franchising is. तो आप basically एक franchise buy कर लेते हैं and then you can easily move, या franchise sell कर लेते हैं तो आप easily move कर सकते हैं in other markets. For example, we have KFC, Subway, McDonald's over here. ये सारी franchises हैं. Localizing existing brands, यानी आप उनको tweak करते हैं to your local preferences. ठीक है. Licensing क्या होता है? Business arrangement in which one company gives another company permission to manufacture its product for a specified payment. For instance, जैसे BlackBerry ने TCL को ये license दे दिया था कि it can produce BlackBerry mobile phones, I think 3-4 years back, 5 years back. ठीक है, तो ये basically license दिया था कि all right, we give you the license to produce our goods. ठीक है, और क्योंकि license था, it was allowed, so it's nothing wrong with licensing then. ठीक है, so this was it. This was the chapter number 3. So inshallah from tomorrow we'll be doing chapter 4, unit 4. Three done, 3 to go, and I will see you tomorrow. So take care. Allah Hafiz.